इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ वीके सब्रवाल जी। सब्रवाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Warm welcome, Mr. Sabharwal. थैंक यू। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजेश हेडलाइंस के साथ। Key domestic indices plunged more than 1%. Sensex closes at 70,371. Nifty settles at 21,239. Union Minister Rajiv Chandrasekhar to inaugurate Synopsys Chip Design Center tomorrow. And projects worth more than 1,25,000 crore rupees to be undertaken in the next 5 years under Parvatmala program, says Union Minister Nitin Gadkari. घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 70,371 पर बंद हुआ। निफ्टी 21,239 पर आया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कल सिनॉप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पर्वतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 1,25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में शुरू की जाएंगी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। आज वैश्विक शेयर बाजारों से जुड़े मिले जुले संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक 1% से अधिक नीचे आ गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,053 अंक यानी कि 1.47% लुढ़क कर 70,371 के स्तर पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 333 अंक यानी 1.54% गिरकर 21,239 पर आ गया। छोटी और मझोली कंपनियों की बात करें तो बीएससी मिड कैप सूचकांक 2.95% नुकसान में रहा, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 2.79% की सुस्ती आई। The key domestic indices plunged more than 1% amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex dropped 1,053 points or 1.47% to close at 70,371. The NSE Nifty dipped 333 points or 1.54% to settle at 21,239. In the broader market at the BSE, the mid-cap index plunged 2.95% and the small-cap index tumbled 2.79%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 6 companies appreciated while 24 companies declined. Sun Pharma surged 4%, Bharti Airtel climbed 3.37% and ICICI Bank rose 2.1%.
On the other hand, IndusInd Bank crashed 5.87% and SBI tumbled 4.19%. Hindustan Unilever dipped 3.81% and HDFC Bank fell 3.45%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged losses except healthcare, which gained 1.07%. On the other hand, realty sector plunged 5.46% and services tumbled 4.06%. Metal and oil and gas declined 3.9%. The overall market breadth was negative as shares of 886 companies appreciated while those of 3,049 declined. A total of 132 companies remain unchanged. सबरवाल जी, मार्केट के बारे में अगर हम नज़र डालें तो मार्केट आज काफ़ी कुछ ऐसा रहा जिसने लोगों की भावनाओं को एक तरह से बिगाड़ करके रख दिया। काफ़ी बड़ी गिरावट बड़े लंबे समय बाद देखने को मिली है। ख़ासतौर पे जो ऐसे सेक्टर्स रहे जहां पर पहले गिरावट नहीं देखी जा रही थी, वो क्षेत्र भी आज इसकी जद में आ गए। किस तरह के सेंटिमेंट्स रहे मार्केट के? देखिए, मार्केट्स जैसा आपको पता ही है कि सेंटिमेंट पर चलता है। कल एक जी बिजनेस और सोनी की डील कैंसिल हुई जिसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे दिया। फ्राइडे को रिलायंस के रिजल्ट आए थे जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए। HDFC बैंक के रिजल्ट भी मंगलवार को आए थे जो उम्मीद से काफ़ी कम थे और मार्केट वैसे भी थोड़ा सा ओवर हीटेड पोजीशन में चल रहा था। तो ये एक आज कारण बना मार्केट के गिरने का। पर मैं ये मानता हूं कि ये एक हेल्दी करेक्शन है। मार्केट हो सकता है कि निफ्टी यहां से 300-400 पॉइंट और नीचे चला जाए, पर एक 20,900 का निफ्टी का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लॉन्ग टर्म में इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और मार्केट यहाँ से ये एक ऐसा समय है जहाँ इन्वेस्टर को अगर उन्होंने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं तो उसमें बना रहना चाहिए और थोड़ी सी और गिरावट आए तो कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी करी जा सकती है। BK, I hope you don't mind me calling you BK. whatever it is. Okay, BK, just after India beat Hong Kong to become the world's largest stock market, Sensex fell over 1,000 points to end at 70,371, which we've communicated. And the sell-off actually was deeper in the broader market, with mid-cap and small-cap indices slipping around 3%. How do you see both these indices behaving going forward? So the fact remains that Nifty touched a high of more than 22,000. Tuesday, when the HDFC Bank results came much below expectation, the market fell. But the broader index last week had not fallen. Today, the broader index has fallen because a confidence shatter among the investor when that Sony cancelled the Z deal. And the fact remains that whenever, whatever you have, when to compensate to a loss of a frontline stock, one has to sell the other stocks also. And a small panic comes, and that's what was that today the small cap index and mid cap index fallen, which has not fallen last week. But that the cumulative effect of that was that though the major index fell by 1.5%, the small cap and the mid cap index fell more than 3%. So Reliance and HDFC banks alone contributed to about half of the loss in Nifty today. We will discuss this after a short commercial break.
सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में। सब्रवाल जी, आज मुनाफा वसूली काफी लोगों में देखी गई, इसको कहां तक जिम्मेदार मानते हैं गिरावट के लिए? देखिए, जो गिरावट आती है वो मुनाफा वसूली की वजह से ही होती है जी। और काफी शेयरों में आज जब बड़े शेयरों में मुनाफा वसूली आती है तो साथ साथ छोटे शेयर उसकी वजह से पिटते हैं। जो इन्वेस्टर होता है उसको कुछ ना कुछ जब बेचना होता है तो वो वे करता है, इस बात को कंपेयर करता है कि आने वाले दिनों में मुझे क्या लगता है कि साधारणतया ये पाया जाता है कि जब भी रिकवरी होती है वो पहले बड़े स्टॉक्स में पहले आती है और जब भी बाजार गिरते हैं तो भी बड़े स्टॉक्स पहले गिरते हैं। और मैंने जैसा बताया कि पिछले हफ्ते बड़े स्टॉक थोड़े गिरे थे तो उसकी वजह से आज छोटे स्टॉकों में मुनाफा वसूली रही। So, taking the example of HDFC Bank, which dropped nearly 3% today, investors are not willing to buy into this dip that happened today. And this has happened because of the aftermath of the disappointing results which you also mentioned, the December quarterly results that we are talking about. So how important, BK, are the quarterly results for the investors and the markets? They seem to be hugely affecting the market sentiments. Yes, you see, a time was there when the result used to come annually. Then a time came when result used to come half yearly. Now the quarterly results come. Results are the barometer of that particular stock. Now the fact remains that HDFC, it is not only because of the result, even after the merger of the HDFC along with the HDFC Bank, people had not liked that proposition. But I am of a very strong opinion that may not be today, but at this level or at a level little lesser than this, HDFC Bank is an excellent long-term buy. Okay. There's another reason that's been cited by the market, and that seems to be the market regulator SEBI may impose tightened ultimate beneficial ownership norms for overseas investors with effect from February 1. Now that has also dented the market sentiments hugely. What's your take on that? You see, SEBI used to keep on coming with the various regulations, and whenever a regulation comes, normally it happens that people take it in the initial stage as it may be harmful to the market, but ultimately all regulations comes, including this regulation, will be the beneficial for the investor at large. And I am of a firm opinion that this was panic, maybe a little, as I said, downside more. But as the growth story intakes, market likely to But BK, I would like to draw your attention to the unofficial estimates which say there could be a sell-off in Indian stocks in the range of 1.5 lakh crore to 2 lakh crore over the next 6 months by funds unable to comply with these norms. And that's why everyone is, rooting for a change in this ownership norms. The fact remains that though if we see the last 9 months, I am just trying to compare it, that during this financial year, in last about 10 months, though the foreign investors were the net sellers, but still
all of that was absorbed by the Indian mutual fund, the number of retail investors which have increased, and the number of retail investors which have increased, and the amount of money which has come into the SIP. I am a believer of a theory that until the redemption comes, the major sell-off will not be there, and we don't see that in the near future there will be any major redemption in either the mutual fund. As we are observing that SIP has increased and the money of the SIP will keep on coming in the next few months also. So I am of a very strong opinion that it will not have a much larger effect to the Indian markets. देखिए, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि एनर्जी सेक्टर के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा, खासतौर पे जब पीएम ने कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है पीएम सूर्योदय योजना के लिए, और दूसरा FIS के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? एनर्जी सेक्टर पर मैं एक बुलिश हूँ, और उसमें भी पब्लिक सेक्टर एनर्जी स्टॉक्स, स्पेसिफिक नाम लेके पब्लिक सेक्टर एनर्जी स्टॉक्स विल सर्टनली आउट परफॉर्म द मार्केट। और जो आपने FII की बात करी, चाहे जितनी मर्जी रूमर हो कि वापस पैसा चाइना में जा सकता है FIIs का, बट फैक्ट ये है कि आज चाइना में इंडस्ट्री रिड्यूस हो रही है और इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में आ रही है। अगले चुनावों के बाद अगर ये सरकार आ जाती है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा FII का इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भारत में आएगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो भारतीय कैपिटल मार्केट पर रहेगा। You mentioned the public sector and you are quite gung-ho about it. In fact, last year we saw a bit of a re-rating of that entire public sector as a cluster. A lot of foreign institutional investors had started looking at it positively as well. Do you think this year also it's going to be any different, or do you expect the positive momentum of the public sector entities to continue? I am of a very strong opinion that it will continue. It will continue. The reason is very simple. The government will not have, because of the inflation and to ensure that the price rise is not there, government have no other option than to disinvest the public sector, and that it looks like that public sector stocks, and especially the public sector energy stocks, will outperform the market. Okay. Today, oil and gas declined 3.9%. Though the factors that we all are discussing over here, that this is one sector that one should look up to going forward. What's your take? I mean, what are the reasons that today affected? Are the geopolitical reasons so strong that they are negatively impacting the sentiments when it comes to oil and gas sector? So, geopolitical reasons today were not there much at all. Today, selling was a cumulative effect of the quarterly results which came in the last week, and for that reason all sectors have got a beating. But yes, I am of a very strong opinion that in days to come even this sector will outperform the market. Okay. And what is your take on the pharma and the IT space? You see, pharma and IT are the shares. Whenever the broader market goes down, these two sectors performs better. Okay. And similarly, but when the market is in the uptrend, these two sectors perform lower than the market.
and it will likely to continue in that way only. But yes, the IT sector in the year to come will perform much better. We'll continue our discussion with market expert B.K. Sabharwal after this small break. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्र में। और अब रुपए पे नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 16 पैसे प्रति डॉलर की स्तर पर बंद हुआ। वहीं 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक आज गिरावट के साथ 103.29 पर था। वीके, हम शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो लगातार लॉजिस्टिक के क्षेत्र में तरक्की कर रही, काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और इनसे जुड़े हुए जो मार्केट के शेयर्स हैं, लोग उनमें पैसा भी लगाते हैं और ये भले ही बहुत अधिक नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा रिटर्न देते हैं। और आज की गिरावट में भी ऐसा कोई कुछ नजर नहीं आया जो इस तरह के सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा सके। तो अगर एक इन्वेस्टर इसमें आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, लॉजिस्टिक्स के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और इसको नॉर्मली जितने रिसर्च एनालिस्ट हैं वो अभी ज़्यादा स्टडी उस पर नहीं कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि जब बेटर चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। मेरी तो एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि हमें सेक्टर का ना विचार करके जो खासतौर से नया इन्वेस्टर है वो ज़्यादा स्टडी तो कर नहीं पाता, उसको सेक्टर और स्टॉक्स कम समझ आते हैं, तो ऐसे लोगों को वाइडर निफ्टी अगर खरीदा जाए जी, निफ्टी 20 अब डीमैट फॉर्म में अवेलेबल है और निफ्टी 20 ने हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो नए इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, जो रिसर्च नहीं कर सकते, जो स्टडी नहीं कर सकते पर और नए तरीके से मार्केट में आना चाहते हैं, उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट निफ्टी 20 में करनी चाहिए। Moving on, the Union Minister of State for Electronics and IT, Skill Development and Entrepreneurship and Jal Shakti, Shri Rajiv Chandrasekhar, is set to inaugurate Synopsys Chip Design Center at DLF Tech Park in Noida tomorrow. Established in 1986, Synopsys widely commercialized logic synthesis, revolutionizing the creation of digital designs from language descriptions. This capability propelled the transition of computer-aided design, CAD, into electronic design automation, EDA era, facilitating the scaling of digital complexity. Synopsys has consistently expanded its product portfolio and market position through substantial investments in research and development, coupled with approximately 120 strategic acquisitions. Today, Synopsys is a leading name in EDA, playing a pivotal role in advancing digital chips within the technology ecosystems and contributes to over 5.9 billion in revenue. Their opening up in Noida is a big thing for India. And digital chips have been in the news because in the automobile sector and others also, these chips are required. So this is a right step that this is an excellent step. If you remember last year, after COVID, there were good news that digital chips are not, we are not able to import the digital chips. So it is a step in the right direction, which will not only boost the technology industry, but even the auto industry also.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत आने वाले 5 वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से 200 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। नई दिल्ली में आज रोपवे संगोष्ठी सह प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सिलसिले में कई पहल की हैं और देश में व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ाया गया है। और अब एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वॉल स्ट्रीट के पिछले सप्ताह के सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद आज अधिकांश एशियाई बाजारों में तेजी आई। हांगकांग का हैंग सेंग 2.6% के लाभ में रहा, वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.6% की तेजी के साथ बंद हुआ और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.5% की बढ़त देखी गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.4% नीचे आ गया और जापान का निक्केई सूचकांक 0.1% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय बाजार में फ्रांस का कैक और लंदन का FTSE 100 0.2% नीचे थे, वहीं जर्मनी का डेक्स 0.1% के नुकसान में था। The 3 major US indices witnessed gain yesterday. The Dow Jones Industrial Average rose 0.36%, Nasdaq Composite Index gained 0.3%, and the S&P 500 added 0.22%. And oil prices eased slightly today as trader weighed simmering geopolitical tensions in several regions against supply outages in the US and returning production in Libya. In intraday trade, Brent crude was trading at 0.89% lower at $79.35 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading down 0.92% at $74.07 per barrel when reports last came in. और आपको श्रोताओं बता दें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोना फरवरी के वायदा कारोबार में बढ़त में चल रहा था। सोना 58 रुपए ऊपर आकर 61,925 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। बीके सबरवाल जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। Thank you for being with us, BK. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices plunge more than 1%. Sensex closes at 70,371. Nifty settles at 21,239. Union Minister Rajiv Chandrasekhar to inaugurate Synopsys Chip Design Center tomorrow, and projects worth more than 1,25,000 crore rupees to be undertaken under Parvatmala program, says Union Minister Nitin Gadkari. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह शहनशाह चुलबुल या पी के रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ 0। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।